humans के काम करने लगे. And what happened basically in this kind of situation is, uh, earlier जो manufacturing plant was handled by 500 plus workers, अब 5 managers मिलके ये पूरा manufacturing plant complete करते हैं, और जो 100 days का काम था वो 1 day में complete हो जाता है. Why? Because it is the power of the AI, and it is the power of the robots. So this is what is happening in the world right now. And there are a lot of changes are also happening. We had the era of transformation of telephone, we had the era of transformation of our banking. Now it's the golden era for transformation of our education. It is need to be transformed. Okay, so what we are doing in this kind of things, because 2030 तक में एक estimation है world will change, the new jobs will create for the our students. तो teachers को काफी important होता है ये सब training important join करना and understand करना क्या क्या skills important है, क्योंकि बच्चे जब job पे जाएंगे, market पे जब निकलेंगे, they have to compete with the world. They have to see that, okay, I can do a better collaboration with the people. Maybe my one team member will be sitting in India, one team member sitting in the other part of the country. I need to collaborate, I need to communicate, I need to solve the problem of the real world. But in the four wall of classroom, if we're not exposed to the technology, this is impossible journey. If we not bring the experiential learning in the classroom, it is impossible journey. एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब किसी गेस्ट स्पीकर्स को जो इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं, उनको अगर हम लोग जब तक लेके नहीं आते क्लासरूम्स में, फील्ड ट्रिप नहीं कराते बच्चों का वर्चुअल, दिस ऑल थिंग्स स्किल्स विल नॉट ग्रो, एंड व्हेन यू नॉट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन द राइट डायरेक्शन. So for doing all those things, I cannot say we can start from somewhere as a moving part. No, there is a framework. There is a framework which guides us how to go ahead. And उस framework का नाम है Education Transformation Framework. And for this, we have already done one session, overview session, day for yesterday, और उसका मैं आपको recording दूंगा. You'll understand about कि what should be do's and don'ts of these sessions. And ये session काफी important है, और इस session में जो हमारे last time जो speakers join किए थे, they are the amazing speakers and best panelists I have ever seen it. They are from the education field, Microsoft director. We had from the government officials. We had the showcase school leaders, and we had Murnal madam, who is the national president award for 2023. We have Mr. Ranjit Disley, we have Miss Sonia madam, and Krishank sir and Sevani sir. Everybody is from the school education segment, and they all share their experience of transformation, right? So ये सब सारे चीजें हुई थी. So anyways, now we should be very clear that, okay, we have to go forward. We don't have to look backward, right? So let's get into the topic of today. First topic, we will go ahead and talk about reinvent productivity with AI. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा, दैट हम लोग को प्रोडक्टिविटी जो है क्लासरूम की, उसको हम लोग को एक नए अंदाज में स्टार्ट करनी है. Right, we have to see that कि how we can reach to many students needs. ठीक है, तो आज हम लोग AI के बारे में थोड़ी बात करेंगे. एंड हम लोग आज की डेट में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल यूज है AI का, उसको हम लोग अक्सर ओवरलुक कर दे रहे हैं. हमेशा हम लोग एवरी डे इन आवर डे टू डे लाइफ वी आर यूजिंग समवेयर AI. Okay, and we know the importance of AI. I'm just giving some examples to you to understand. If you see the car parking, we have the census, we have the sensor. When we go and do the car parking somewhere, you see that, okay, the sensor is started beeping up because the object is coming very closer. That is one way of one type of AI technology which we are seeing it every day. इससे क्या हो रहा है कि जो ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, उनको काफी ज्यादा एक हेल्प मिल रही है AI की वजह से, राइट? बिकॉज इट इज हेल्पिंग आउट. अपार्ट फ्रॉम दैट और भी क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? आप अगर Amazon पे या फिर कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप सर्च कर रहे हो, कुछ आप शॉपिंग कर रहे हो, इट ऑलवेज सजेस्ट यू what is the things which you like it, that always comes always in the type in the front. और आप ये सारी चीजें एक्सपीरियंस डेफिनेटली कर रहे होंगे, चाहे वो Amazon की बात हो, चाहे वो कार पार्किंग की बात हो, चाहे वो आप म्यूजिक सुन रहे हो मोबाइल फोन में, और म्यूजिक में भी आपको प्लेलिस्ट जो आपके फेवरेट सिंगर्स है उसके ऊपर में आते हैं. क्यों ऐसे होते हैं? बिकॉज वी नो दैट इट इज बिकमिंग AI इज बिकम पर्सनलाइज फॉर अस टू मेक आवर डे टू डे लाइफ मोर इजियर. अगर हमारे डे टू डे लाइफ में इस तरह AI का यूज हो रहा है, तो व्हाई नॉट इन एजुकेशन? डू यू थिंक दैट इम्पैक्ट ऑफ AI इन एजुकेशन इज गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज? अगर हमारे डे टू डे लाइफ में इतना सारा इंपॉर्टेंस रख रहा है AI, but imagine that when it comes into the mainstream of education in a very controlled way,
we can actually make it a more useful. That time it will be definitely will be more useful than anything. And I can just share you a few things here, how it can be useful. Now, all of educator must have opened the MS Word, Excel, PowerPoint. हम लोग सबको use करते हैं. But there is a time when we start using this Excel or Word or PowerPoint. Sometimes कभी ऐसा हुआ है हमारे साथ में कि that we have been staring the blank click blinking in the thing and we are thinking what to write. This is normally happens when we start working on any Word document or blank Excel पे या फिर PowerPoint कुछ बनाना होगा तो it's a blank blinking is happening and it is thinking okay what we should go and do it, right? How we can go and create our presentation, how to start with, how to do the things. um, so for many people they are the natural doers so they can do it, but for many it is a first step is the showstopper. There's nobody to guide them during that time. So Microsoft is come up with a solution and they were coming up, AI is there to help you out, and they have come up with a solution called Copilot. सो आपके साथ पे एक को पायलट होगा माइक्रोसॉफ्ट का जो आपको इन सब प्रोडक्टिविटी चीज में आपकी हेल्प करेगा, राइट? तो वो कैसे होगा, दैट पार्ट आई एम जस्ट गोइंग टू गाइड यू. सो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू वन स्मॉल वीडियो विच विल गिव यू लिटिल क्लैरिटी अबाउट कि आप जब आप ब्लैंक स्क्रीन को देखते हो उसमें आपको एआई कैसे हेल्प करता है एज ए को पायलट बन के. लेट्स सी अ स्मॉल वीडियो देन वी कैन फर्दर डिस्कस. Great. So I think you all have seen this important video and you have understood one thing, that how the co-pilot of Microsoft is going to help you out in these productivity things. Example, tomorrow you wanted to create a lesson plan for your students. आपको एक lesson plan बनाना है या फिर question paper ready करनी है या फिर कुछ भी करना है. Now there's a lot of open AIs and chat GPTs and so many things are there which is all integrated with Microsoft. And हम लोग पहले आते थे different sites पे and we go and generate it. If you all have used the chat GPT, you know that okay how to use it. But again, I'll just explain you about little bit about chat GPT also. But माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट क्या करती है कि आपका एक कंपेनियन बन के, आपका एक फ्रेंड बन के, दे मेक श्योर दैट दे आर सिटिंग विथ यू इन ऑल द माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशंस. अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो, कुछ चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, यू कैन यूज इट. आप वर्ड यूज कर रहे हो, यू कैन एक्चुअली गो एंड यूज द थिंग्स. एंड वर्ड में आपने कुछ टाइप किया, राइट ए लेटर फॉर सो मेनी थिंग्स, द लेटर गेट्स टाइप्ड इन द वर्ड. यू जस्ट हैव टू डू a small changes if required and get it done. So Copilot is going to be part of all the tools of Microsoft, like how I showed you. Some examples I'll just show you right now, that how this AI actually works, and then we can see that Copilot, how it works. We can see some live examples also right now.
Okay, I'll just change my screen. I'll show you that how you can enable that and how you can use it. Okay, and AI is not a very very new things which is a part of the Microsoft tools. This Copilot is not a very new things. इसके पहले भी Microsoft के almost सारे applications में AI का features inbuilt था, जैसे कि Excel sheet. Now I'll just show you some examples also in Excel sheet and PowerPoint, Word. ये सारी जगह पे कहीं ना कहीं पे आपके डिटेल्स अवेलेबल थे, राइट? तो मैं क्या करता हूं, आई जस्ट गो अहेड एंड share my screen. Allow me a second. I'll show you some of the real use cases of AI in existing applications. So I have stopped sharing my screen right now, and I'm going to share the screen. Great. So I will go back to one of my Excel sheet, which is open up right now. You can see that Excel sheet is there. And let us understand one thing here. Okay, I just before I go into the Excel sheet, I will also address few questions which has come up right now from the audience. So one of the question has come. Yeah, one of the question has come from the segment is, what is the future of teaching in this new age of AI? That's what right now I'm just going to define all those things. Let me just explain you some of the examples of defining it. Now, this kind of Excel sheets, we all have seen it in our life, right? This is the common Excel sheet I have just created today morning. And इस Excel sheet में क्या है कि बच्चों का नाम है, उनका क्लास है, और इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, हिंदी में कितने, मैथ्स में कितने, and there is something called total and there is a percentage. Now, if I have to find out कि who is the top 3 स्कोरर ऑफ ग्रेड 1A क्लास के जो बच्चे हैं, उसमें टॉप 3 किसने रैंक लाया है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? Okay, we generally either we go and filter it or we use the pivot table. All those things we are going to use it. But इनबिल्ट एआई जो एक्सेल सीट के अंदर में भी है, जो पहले से यूज हो रही है विदाउट को पायलट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. को पायलट का एक बटन आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे, बट वी हैव ऑप्शन कॉल्ड एनालाइज डेटा. हर एक्सेल सीट में एक फीचर होता है एनालाइज डेटा. इफ यू नॉट एबल टू फाइंड इट, आपके पास में एक ब्राउजर पे एक ऑप्शन होगा जिसपे आप डाल सकते हो एनालाइज डेटा. ठीक है, एक टूल है. आप उस टूल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, इट जस्ट सेलेक्ट द टेबल और ये पूछता है कि आप उस पे क्वेश्चन पूछो. ओके, कुछ क्वेश्चन पूछो. सो एग्जाम्पल जैसे कुछ सजेशन दिया हुआ है, इनसाइट फॉर हिंदी, हाउ मेनी डिफरेंट नेम्स आर देयर, ऑल दोस थिंग्स आर देयर. बट आई वांटेड टू ask a question here called top 3 total top 3 total I wanted to know for class grade 1A with name. Right, this is one of the statement I wanted to write it here in Excel sheet. I hope you were able to see the screen properly. And the moment I hit enter, it just gives me the result. Okay, Shamal Kumar Mandal, Papu Das, Anjan Kumar Banerjee, they all have got the top scorer of the classroom from grade 1A. Likewise, अगर मुझे 2A का चाहिए, मैं बस change कर दूंगा. 2A is coming up, top 3. If I want top 5, I'll just change the things, top 5 will come. So what happens? The way you wanted to see that maths पे कितने marks है, students के कितने science में marks है, these all can be quite possible. This is all inbuilt feature which is available in the Excel sheets. But अभी तो हम लोग ये यूज कर रहे हैं एनालाइज सीट का, बट नाउ व्हेन Copilot will be a part of things, you don't have to click on analyze data also, you will have a Copilot button. जब आप Copilot क्लिक करोगे, उसको आप जो भी पूछोगे, it just sort and gives you the information, right? So that is one of the things which is part of the session. Now some more example I'll show you the use case of AI. Example आप देखो, ये एक मान के चलो ये तो एक्सेल में डेटा है. If I click here, it shows the data.
बट इफ आई टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं आपको, अगर मान के चलो मैंने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया, दिस इज हाउ द स्क्रीनशॉट्स कैन बी टेकन। मैंने यहां तक एक स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मान के चलो एक डिफरेंट सीट पे मैंने एक इमेज को इंसर्ट कर दिया। दिस इज द इमेज, दिस इज नॉट ए डेटा। इमेज इंसर्ट किया। अब इसमें से मुझे वैल्यू चाहिए। आपके पास में काफी एग्जांपल्स होंगे जब आप स्कूल में रजिस्टर मार्क्स एंटर करते हो एंड यू वांटेड टू जस्ट टेक द फोटो एंड यू डोंट हैव टू एंटर द मार्क्स इन अ कंप्यूटर। आप चाहते हो कि वो फोटो को मार्क्स के फॉर्म में आ जाए और मैं एनालाइज कर पाऊं, मुझे एंट्री से बचना है। उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जैसे इमेजिन करो ये एक इमेज है, ठीक है, ये मान के चलो मेरे किसी ड्राइव में सेव है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले सेव कर देता हूँ इमेज को। इफ आई कैन सेव दिस इमेज समवेयर, सेव एज पिक्चर, एंड मैंने इस इमेज को एक पीएम श्री स्कूल के नाम से एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने डाल देता हूँ पिक्चर को, मार्क्स। ठीक है, एक पिक्चर मैंने डाल दिया। अभी इसको मैं डिलीट कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं एक डेटा पे जाके मैं क्या करता हूँ कि डेटा को मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ फ्रॉम इमेज। तो यहाँ पे फ्रॉम पिक्चर किया डेटा के अंदर में, और पिक्चर फ्रॉम इमेज, और इस केस में मेरे पास में एक फोल्डर है, एक इमेज है जिसको मैंने सेलेक्ट किया। ये डेटा एक ऑटोमेटिक आप देख रहे होगे एनालाइज हो गया, और मैंने फिर यहाँ पे एक ऑप्शन पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट डेटा। वी कैन रिव्यू इंसर्ट और समथिंग। जब मैं इंसर्ट पे क्लिक किया, कुछ कुछ इसमें बोल रहा है कि 13 रिक्वायर्स द रिव्यू। आई कैन डू द मैनुअल रिव्यू फॉर फ्यू थिंग्स, नो प्रॉब्लम, but it gives me the data into this format, proper format for me to for the further analysis, right? few changes तो मैं कर सकता हूँ, जैसे नेम मैंने यहाँ डाल दिया, क्लास मैंने यहाँ डाल दिया, राइट? एंड स्मॉल स्मॉल जो चेंजेस जो बताया मुझे 13 चेंजेस इज पॉसिबल, वो सब मैंने स्मॉल चेंजेस कर दिया। बट यू कैन सी दैट कि कितना टाइम हमारा बच सकता है when we use this kind of tools which is a part of our excel sheets and which is a part of our system, right? And this has happened with the help of the algorithm of AI, which is a inbuilt inside our Microsoft tools, right? So this can makes your life more easier when you are going to use this Excel Word, Excel features. तो मैंने दो example दिया आपको, but when you use the Copilot, it will be a different story altogether. Now I'll just share my screen one more time, and I will share you the screen of one of my PowerPoint presentation जहां पे मैं AI का use करूंगा, Copilot का use करूंगा। एक तरह से मैं दिखाता हूँ। Great, I can share my screen right now. So I am into my Office 365 screen. अब जिसको पता नहीं Office 365 होता क्या, you all will get a license for that. So आपको क्या करना होता है कि when you go to the Google and you type it office.com, आप Microsoft 365 पेज में लॉग इन कर लेते हो। आपको एक आईडी पासवर्ड दी जाती है जिसके थ्रू आप आईडी लॉग इन कर लेते हो। आप माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्सनल अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हो और एक बिजनेस अकाउंट भी क्रिएट होता है जिसमें लाइसेंस लोडेड होते हैं। पर्सनल अकाउंट में यू नॉट गेट लॉट ऑफ लाइसेंसेस, राइट? बट बेसिक एप्लीकेशंस के लाइसेंस पर्सनल एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है। सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट क्रिएटिंग वन ऑफ योर पर्सनल अकाउंट टू प्रैक्टिस द टूल्स। तो हमने क्या किया, वी विल गो टू दिस एप्लीकेशन, और इसमें मुझे सारे टूल्स मिले, उसमें मैंने पावर पॉइंट को चूज कर लिया। ठीक है, पावर पॉइंट में क्या हुआ कि वी गो एंड क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन बाय क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन। ऑल ऑफ अस वी नो दैट पावर पॉइंट हाउ इट इज। नाउ दिस इज माय पावर पॉइंट क्रिएशन। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ विदाउट को पायलट के बिना कैसे यूज होता था ये चीजें। आई जस्ट शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ इट। तो जैसे कि ये हमारा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, अब मुझे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना है, क्या टॉपिक पे करें, कैसे स्टार्ट होगा, कैसे क्या कितने स्लाइड्स बनेंगे। वी रिक्वायर डेफिनेटली ए को-पायलट। Okay, for example, we can think about any topic for that matter, जैसे कि
we can use our current topic of let's say we can go for one of the classroom topic of crop management for grade 8. ठीक है, try करते हैं. So we are just going to click on one feature here of AI feature. I'm just showing the AI feature right now, but it's not a that part. So presentation topic मैं डालता हूँ crop management for grade 8 class, right? Number of slide I wanted is मुझे चाहिए 10 slides. आप देख रहे हो? मैंने क्रॉप मैनेजमेंट डाला और नंबर ऑफ टॉपिक्स मुझे चाहिए 10 स्लाइड्स के. और फिर मैंने क्या किया? I have just gone ahead and 1 second. I think there's some. Okay. So what I did is I just put a topic of presentation and number of slide डाला और मैंने क्लिक किया create slides पे. ठीक है? तो आप देखोगे कि if I have to create a topic for my student in the classroom, what I can do is immediately you'll see lesson plan for product of it. And वहां पे क्या हुआ, parents is possible in this kind of, and हम लोग algorithm of AI which now I wanted to create a question after this, a quiz after this. So create a quiz on above topic, and I can say also create a 5-question objective quiz on above topic. So you can see immediately it creates a 5 questions quiz in the chat and it is giving you the answers of it. तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से काफी सारे वैल्यूज आप इनपुट कर सकते हो और अपनी प्रोडक्टिविटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर पाते हो आप. और अगर मैं देखूं प्रेजेंटेशन के टाइम पे, तो आप देखो मेरा प्रेजेंटेशन रेडी है ऑलमोस्ट, जो भी टॉपिक मैं यूज किया हूं. तो आप ट्राई कर सकते हो इस चीज को. एंड इसके लिए देखो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन आज का रेट आ गया. इट क्रिएटेड द एजेंडा ऑटोमेटिकली फॉर मी. It created something called Introduction to Digital Transformations, Challenges in Education. It just creates for me, okay? And I can always go and edit on the top of it, whatever I require to do it. That's the power, that's the thing of this. Now, what is the activity I wanted you to do right now is, I'll just quickly tell you what can be done. I will be sharing you one of the yeah, perfect. So if you go to the Q&A, in the Q&A, I have given you one link. That's a link of your class notebook or one notebook, where I wanted, if you use the chat GPT or online AI tools right now, what you can do is you can go back to this kind of tools, AI tools. Just 1 second. AI tools, and you can give a title here called example. My name is Prashant and hyphen topic on crop management. One section is created here. You can create your name first, and inside the name, you can put a topic called my lesson plan. And आप क्या करो, जो आपने ऑनलाइन टूल से आपने जनरेट किया है presently, the use of AI जो आपने देखा है, because we are going to the third phase, that's the chat GPT directly and creating it, but tomorrow it all can come inside your things used of Microsoft 365 Copilot. तो आप उसको क्या करो, लेसन प्लान को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो. ठीक है, तो आपने वहां से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया. तो क्या हो गया कि मेरे नाम के सामने में आई हैव गॉट वन ऑफ द लेसन प्लान कॉपीड एंड पेस्टेड. आई नो हाउ टू यूज द टूल. तो आप भी अपना यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन या डिफरेंट डिफरेंट पेजेस इनसाइड दिस एंड कीप पेस्टिंग इट. सो वी नो दैट ओके वी ऑल आर इन द सेम पेज, राइट? तो आपको प्रोसेस समझ में आया. अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो और आपको करने में डिफिकल्टी आएगी अभी, टेक योर टाइम.
make a note of the points, and session complete होने के बाद में आप आराम से कर सकते हो इस चीज को, right? So there's no hurry on this. So, but those who wanted to do it, they have got the edit access of this link. आप उस पे जाके contribute कर सकते हो. This is the edit access of this OneNote page. We'll come back and see this later. Okay, now let's me go ahead with the topic. Okay, so before I go to the next topic, I'll just review the questions which has come from your side. मैं देख लेता हूँ चीज. Okay, one of the question has come that AI can be used for a controlled manner. It means that inside your productivity tool, you are using it because now Microsoft is inbuilting the AI inside your productivity. You don't have to go to the third places and generate the things. It is used by the teacher right now. Initially, you have to use by the teacher, and then these same feature sets with the things can be shared with the students in the later time when we know that, okay, this is how we can, the specific things we can actually, students can only go and explore inside the Microsoft Teams framework, right? So I'll go forward and I'll explain more things right now. That's one of the question has come, and one more question, I can see it right now. Okay, we will go to see that the next features, which is the inbuilt, you'll understand about right now the inbuilt capabilities of AI, which students can use in more controlled way. So, example, the reading capability, right? So I think my screen should be shared. So your question will be answered just now. Yeah. So the reading capability is one of the major important challenges which is world is going through. Okay, or even after COVID, it has created a big problem, and not only for the higher education student, it is also happening with right from the elementary students. And we have identified certain challenges which is a problem in the reading capabilities which is happening and how AI can help it out. So there are challenges. Example, you have got about, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो उनको स्टार्ट और एंड साउंड पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, एंड टीचर कैन नॉट spend time with one and every students for that matter. Mispronunciations की काफी दिक्कतें होती है. Everybody has got some kind of things in the mispronunciation. When they read it, when you are giving them the reading materials in the classroom, वो काफी words को skip भी करते हैं. They are having the inability to spell it. They have some slow reading capability. ये सब चीजें कुछ हम लोग every day we are seeing the challenges in the reading, and we cannot spend individually with each students to go and solve it because it's a 40-minute classroom and a teacher cannot do more about this. But teacher can definitely give a lot of reading practice and all those things. So how this AI coach can also help you out right now. We have a term called AI coach, which actually becomes a coach of the students in understanding this or overcoming from these challenges. Okay, we call it as the reading coach, an immersive reader. So that is the tools which is going to help you out in this process. तो मैं एक छोटा सा आपको video दिखाता हूँ, and after that video we'll go into the explanation of this tool. ठीक है? Topics that an educator has on their plates. I started using reading progress in the fall of last year. And what's nice is not only can we have more students being assessed at the same time, but the students themselves want to read more. They love being able to read out loud. They love knowing that they're on camera. They love being able to watch themselves. They are asking for more opportunities for reading progress assignments, taking ownership of their learning. And all of the tools in reading progress really let them do that. This is
the atomosphère, and all the natural. These words were the most challenging for you. Select any word to tackle them again. At, must, fear. Atmosphere. You are making your brain stronger. Nice work. Reading coach is truly a dream come true for teachers. I can have a class of 30 students all getting feedback and individualized instruction, and now they know how to read a word that they were struggled with. They get almost all of the water they need from their flexible omnivorous diet. One of the things that I love about Insights is that I can just scroll right down and it shows me at a glance the words that students were struggling with. And I'm able to see student by student what their needs are, and I can pull them from small group instruction based on what they need. When I see the future of reading progress with Reading Coach, I really see how the students are going to respond. They want to do better. They want to improve upon their last attempt when usually they don't have that opportunity. The fact that they can practice reading out loud in a safe space and build their confidence is one of the best things about reading progress. Yes. So now how to do this, how to implement this, right? So reading progress and reading coach is one of the controlled way where teacher can make sure that the students can go ahead and use the AI in day-to-day life. So अभी कैसे हम लोग ये सब चीजें करते हैं? अब देखो example I'll just show it to you. Meantime, before I go ahead with this topic, I just wanted to see once whether the lesson plan is getting created. And I'm amazed to share you the responses that there are many teachers who has created their pages. You all can visit that one notebook and they are able to use that and creating their lesson plans. That's amazing. Now, going forward, I'll just explain you how exactly we can do it. You have seen this reading progress and reading coach. It's a two-way things and it's the best thing which Microsoft has come from. एंड इससे क्या होगा बच्चों का मतलब टीचर कैसे करते हैं टीचर को एक पैराग्राफ टीचर कैन गिव असाइन द पैराग्राफ टू ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बच्चे उस पैराग्राफ को रीड करते हैं इट्स नॉट ओनली अबाउट द स्टूडेंट्स एनी इंडिविजुअल आई कैन ऑल्सो गो एंड लर्न from the process and I can also increase my fluency and mistakes and everything I can do it. तो यहाँ पे क्या होता है टीचर creates a reading assignments वो Microsoft Teams में एक रीडिंग असाइनमेंट का ऑप्शन है. When you get a software, you'll get to use it. Reading progress up. This is about the controlled way from the teacher side. There is a student segment is also there, which I'll explain you. But teacher क्या करते हैं? Teacher teams के through बच्चों को एक paragraph assign करते हैं. Once that is assigned, what is the next step? The students gets the paragraph और उनके पास में एक start reading का एक बटन आता है. They receive the reading progress and let's say the complete geography of earth का एक topic है जिसे बच्चे को read करना है. What the student will do? The student will just click on start reading and start with her video camera. She will start reading it. After the reading is completed, computer automatically checks the pronunciation mistakes or missing words or use of fillers, everything the report it gives to the teacher. What are the mistakes the student has done in reading? तो क्या हुआ टीचर को इंडिविजुअली चेक नहीं करना पड़ा सिस्टम हैज डन द चेकिंग फॉर द टीचर एंड पोस्ट दैट सिस्टम इज ऑल्सो हेल्पिंग द स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस द इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कि एग्जांपल आप देख रहे हो इस वीडियो इस इमेज में कि उस पैराग्राफ में जहां जहां पे डिफिकल्टी होगी वो सब वर्ड्स को प्रैक्टिस करने के लिए भी कंप्यूटर आपको देता है ठीक है और फिर उसके बाद आप देख रहे हो कि उस पर भी बच्चे क्लिक करके दे कैन ब्रेक द वर्ड इनटू स्मॉल सिलेबल एंड दे कैन रीड इट ऑन कंप्यूटर विल गिव यू द अपडेट्स कि आप प्रॉपर रीड कर रहे हो कि नहीं रीड कर पा रहे हो दैट इज द वन थिंग विल आल्सो कम्स अप टीचर को रिव्यू करने के लिए इस टाइप का स्क्रीन आता है वेयर टीचर कैन एक्चुअली गो अहेड
and see the students how they have done. If I just zoom this image, you will understand. Accuracy rate, correct word per minute, mispronunciation, omission, everything was done by the system only. Teacher can just review it, each student work and submit. I'll tell you one of the case study of this one school in Gujarat. They had given this activity for 3 months to a students. Hindi ka passage diya, English ka passage diya to make them to read and become a fluent speaker. Initially there was a hiccup. First month, 2 month, 3 months, there was a like students are doing the practice of this paragraph, but there was no improvisation. But a real impact was seen after 3 months of study. And I have got the impact analysis. जो बच्चा first time start किया था और वही same students when they started after 3 months, there is a major difference in the way he was improving himself. That was the thing which I have seen it. And क्लास टीचर को हमेशा एक रिपोर्ट मिलता है जिसमें वो ट्रैक कर सकते हैं व्हाट आर थिंग्स इज गोइंग ऑन. Likewise, जो रीडिंग प्रोग्रेस एंड रीडिंग कोच स्टूडेंट्स कैन यूज इट बाय हिमसेल्फ अलोन. अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन है, स्टूडेंट कैन यूज इट. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करना है. Students can open any paragraph for their own personal learning, and that paragraph will come. The student can listen first how computer is reading in the different languages, whichever language the student wanted to listen it, and then student can speak and system will correct them out कि क्या mistake आप कर पा रहे हो. So all those things is done in the free tools. Now you don't have to spend on lot of language labs and all those things. These are all predefined features which is available to you. Okay. So one of the quote of a principal of a school is like this: with this technology, it is like there are 20 extra teacher in one classroom, and it can be managed in with a few clicks. It is very easy to use. It's rewarding, like we see every day in our schools. It works. It is definitely going to work out. इसी टाइप से Microsoft is like this kind of coach. This is kind of reading coach which is helping the students to read it. उसी टाइप से मैथ्स के भी कोच होते हैं, सर्च के भी कोच होते हैं. मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर ही स्टूडेंट्स को ये सारे कोच दिए जाते हैं जो कि को पायलट कोच होते हैं स्टूडेंट्स के लिए. और ये कोच उनको कंप्लीटली एक काइंड ऑफ मेंटर करते हैं जो कि टीचर के बाद उनको कंप्लीटली हेल्प होता है ये सब चीजें करने के लिए. मैथ्स के लिए भी, मैथ्स के सॉल्यूशन डिस्कस करने के, मैथ्स को हेल्प करने के लिए दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल इज अवेलेबल. मैं आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिखाने वाला हूँ, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट शो यू अबाउट द मैथ्स आल्सो. 2022 में जब डिक्लाइन हुआ था मैथ्स का स्कोर भी एज पर दिस नेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन स्टैटिक्स इट इज वेरी लो. एंड काफी इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स के लिए भी हम लोग को काफी इम्प्रोवाइज करना और डेटा ड्रिवन डिसीजन लेके आना. उसके लिए मैथ्स कोच का भी फीचर है जो कि वर्क करता है. मैं आपको वो मैथ्स कोच का दिखाता हूँ. मैथ्स कोच में भी स्टेप से जनरेट क्वेश्चंस होते हैं टीम्स के अंदर ही, और स्टूडेंट्स को काफी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं. दे सॉल्व द क्वेश्चन, दे सी द स्टेप्स, एंड टीचर कैन प्रोग्रेस कि कितने बच्चे कैसे कैसे इंप्रूव कर रहे हैं. Currently, also system में मैथ असिस्टेंट के नाम से वन AI is already inbuilt. उस AI के बारे में अगर मुझे दिखाना है आपको तो आप देखो एग्जांपल. अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वन नोट ओपन किया, और वन नोट इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे आपको कुछ सॉल्व करना है एक्स के लिए. एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स मैंने लिखा हुआ है. अब आपने कोई इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, जैसे कि वन ऑफ द इक्वेशन आई एम गोइंग टू राइट हियर इज कॉल्ड 6x minus 19 is equal to this, and I will click on this math assistant option. ये option था select and solve for x, select and solve for, and show me the steps of how you solve it. ये सारी चीज बच्चे खुद से कर सकते हैं. They can type the equation, they can draw the equation converts into, or the drawing converts into equation, and computer solves it. Students sees the okay how this has been done, what are the steps involved. Everything is showing you right now. And these tools are already available for you to use it. You just have to use this tool, make sure the students know about these tools, and any kind of equation, whether it's a linear equation, quadratic equations, कुछ भी आप उनको problem देना चाहते हो, it solves for you. It gives you the step-by-step analysis. उसको आप immersive reader में भी सुन सकते हो, multiple languages में, right? So that is one of the segment of this. And आप practice quiz भी generate कर सकते हो यहाँ maths के लिए. अगर आप एग्जांपल देखोगे, कुछ ड्रॉ करके भी अगर हमको कुछ क्रिएट करना है, जैसे कि हमने एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, आई जस्ट शो यू दैट वाज.
जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा है यहाँ पे, पेन से ड्रॉ किया, ड्रॉ टूल से ड्रॉ किया। एक टूल है यहाँ पे, वी हैव क्लिक ऑन सेलेक्ट द एंटायर एरिया ऑफ ड्राइंग एंड क्लिक ऑन सॉल्व फॉर एक्स। जब आप करते हो तो आपको एक इक्वेशन आ जाता है, उसको भी आप सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी एंड यू कैन जस्ट गो अहेड एंड सी द स्टेप्स। दिस फीचर इज अवेलेबल इन वन नोट अंडर ए ड्रॉ टैब। आप आज ही ट्राई करो इस फीचर को, इट इज ऑल अवेलेबल टू यू, राइट? सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स ऑफ मैथ्स कोच। Now we will do one activity before we go for the small tea break. We will go for a quick activity. मैं एक आपको एक रीडिंग डॉक्यूमेंट मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ है, आप वर्ड पे ओपन करो और वर्ड पे आप एक डॉक्यूमेंट ओपन करो, राइट? एंड हाउ इट इज गोइंग टू हैपन, आई विल शो यू। आप वर्ड पे एक डॉक्यूमेंट को इस तरह से ओपन करो और उस डॉक्यूमेंट पे आप व्यू पे क्लिक करो। व्हेन यू क्लिक ऑन व्यू, यू हैव द ऑप्शन ऑफ इमर्सिव रीडर। जब इमर्सिव रीडर पे क्लिक करोगे, you will get the paragraph. You can hear it also. When you click on the play button, green play button, आप वो सुन सकते हो। बट अगर आपको खुद से इसको प्रोनाउंस करके स्पीक करके प्रैक्टिस करना है सेम पैराग्राफ को, तो आपको क्या करना है उसके लिए, आपको राइट साइड में एक बुक की तरह आइकन बना हुआ है। यू कैन क्लिक ऑन दैट बुक आइकन एंड क्लिक ऑन इनेबल द रीडिंग कोच। बाय डिफॉल्ट ये ऑन नहीं होता है, यू हैव टू इनेबल इट। सो व्हेन यू क्लिक ऑन इनेबल इट, you will be able to just go ahead and start dictating. जब आप डिक्टेट पे क्लिक करोगे, आपसे माइक्रोफोन का परमिशन पूछा जाएगा और आप स्टार्ट कर दो रिकॉर्डिंग। जब रिकॉर्डिंग करोगे, आफ्टर यू रीड एवरीथिंग, यू विल स्टॉप इट एंड देन सिस्टम विल जनरेट ए रिजल्ट कि आपका कैसा प्रैक्टिस हुआ। इमेजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स को सेल्फ लर्न करना है, दिस इज द बेस्ट टूल फॉर द रीडिंग कोच। इट इज अवेलेबल इन एनी ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन। तो आपको क्या करना है, मैं आपको एक सैंपल वर्ड एप्लीकेशन भेजता हूँ एंड अगर कुछ लोग अपने खुद से वर्ड डॉक्यूमेंट में बनाए, कुछ लोग सैंपल वर्ड डॉक्यूमेंट पे बनाए, और दे शुड गो एंड क्रिएट दिस थिंग्स एंड रीड इट। जब आप रीड करोगे, डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे और आपका स्कोर भी बताया जाएगा। तो आप ये स्कोर का स्क्रीनशॉट ले लो आप एक, ठीक है? मोबाइल से स्क्रीनशॉट या जैसा भी आपको होता है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और स्क्रीनशॉट को आप क्या करना, वी आर गोइंग टू शेयर यू वन पैडलेट लिंक। आप पैडलेट लिंक पे अपने नाम के साथ में अपना स्कोर को पेस्ट कर दो। जैसे एग्जांपल, मैं पैडलेट पे गया, आई हैव टू क्लिक ऑन द ब्लू कलर प्लस आइकन और मैंने अपना नाम डाला ऑन द टॉप। एंड उसके बाद नाम डालने के बाद में आई हैव टू पेस्ट माई लिंक, दैट मीन्स द स्क्रीनशॉट और अटैचमेंट। आई विल डू इट हियर एंड पब्लिश इट। तो क्या होगा, मुझे मेरा स्कोर पैडलेट पे दिखेगा, बिकॉज आई हैव डन दिस एक्टिविटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसे ये रीडिंग कोच वर्क करता है, राइट? तो इसको करने का सिंपल तरीका, अगेन आई विल रिपीट इट। Open any Word document, write any paragraph, click on Immersive Reader, enable the reading coach, और फिर आप dictate करो जो भी लिखा हुआ है और you get a result. Result को screenshot लेके you can paste it. Right? That's what the reading coach is all about. तो ये process को हम लोग start करते हैं अभी। तो उसके लिए what I'm going to do is I am going to share a document of a reading coach in the announcement. मीन टाइम आप भी कर सकते हो इस चीज को और स्कैन भी कर सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड ऑल्सो। या आई हैव शेयर्ड इन द अनाउंसमेंट। तो आप अपना खुद का वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्लिक ऑन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट व्हिच आई हैव गिवन यू, आई हैव शेयर्ड विद यू। तो आपको व्यू पे क्लिक करना है एंड अंडर व्यू यू विल हैव द इमर्सिव रीडर। क्लिक ऑन इमर्सिव रीडर एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग एंड यू विल गेट इस रिजल्ट और प्रोग्रेस। आप वो रिजल्ट को स्क्रीनशॉट लेके पैडलेट पे आपको पेस्ट कर देना, सो दैट वी कैन सी दैट एवरीबडी कैन सी दैट रिजल्ट, ठीक है? So that process, you please continue it. You see the Q&A option in the chat where the links are shared. So at this point, until you complete this activity, we'll stop here for 5 minutes for a short tea break.
and post that we will continue the next segment of the session, right? So although there's a climate is very cold